Hello everyone, welcome to the class. I hope that everybody is fine and in good health. So please give a confirmation कि audio video clear आ रही है. So today I thought that instead of discussing the questions, let us discuss a topic that is problematic to many of us, right? So we have discussed already that what are the topics that everybody is facing issue of. Thank you, Nandini. So many of you were having certain problem in TOC, right? And the major thing that you were having problem were in regular language and expression, right? So I thought that why not we have a session on regular languages and expressions, okay? So let me just wait for a few more minutes and then we'll start with the class. Meanwhile, you all know me that my name is Ria, right? And you can always contact me on this Telegram group, that is t.me/netRiaDigimento. So all those who are new or who will be watching the video later as well, please do join this Telegram group so that you can be updated about all the classes and you will be provided the PDF as well, right? So after today's class, whatever we'll be doing over, whatever we'll be discussing over here, the PDF you will get on this Telegram channel, okay? And if you have any doubt related to the course or related to the course structure, course fee, anything, feel free to call on this number 98218-76104 and all your doubts will be cleared as well, okay? Good evening, Archana. ठीक है, and do install this Android app so that you can access your lectures and access all the courses over here. As you all know that from 1st Feb we'll be starting the new course, ठीक है? And I have told you that we are having two types of courses. One is your 8 months course, right? ठीक है? And the other one is your subject wise course. Okay, and I have already told you that both these courses are starting from first only, okay? And in both these things, first subject that I'll be teaching is your discrete mathematics, discrete structures and optimization. Okay, so if you want to join, still you have 2 days. Please enroll yourself into any of the course whichever you want. Okay, subject wise में the first 3 subjects that we have taken into consideration is your discrete. One is discrete, another one is web programming, and another one is your IoT, right? So these 3 topics are the subjects that I'll be taking in this subject wise course. Course 1 basically it is, okay? And all the things will be taught to you in 8 months as well. So all those who want to take the course, who want to buy the course, please buy it by now. From 1st Feb we'll be starting the syllabus and we'll be starting the course. We'll be starting preparing for NET 2022. Let's see when it will happen, but we will make sure that by June, July our entire syllabus is over so that we can revise as well. And you all know that within this course, both the courses will be provided with your mock test, mini test, surprise test, practice session, doubt sessions, everything will be provided to you, right? Good evening, Gokula. Good evening, Abhishek. Okay, everyone. So please first install this Android app, and second, do enroll yourself into the course whichever you want to buy. Good evening, Abhay. ठीक है, so course का मैंने आपको पहले ही बता दिया, both the courses are valid and open to you now. Please, in whichever course you want to enroll yourself, enroll it, and the number given is 98218-76104. Okay. Okay, so let's start with today's class. So first thing that we'll be studying is families of formal languages. Okay, so many of us we have studied this Chomsky hierarchy as well. So we basically have how many types of languages? We basically have 4
or 5 types of languages, ठीक है. So first we have type, मतलब generally we start with type 0, then we have type 1, then we have type 2, and then we have type 3. We generally have 4 types of languages. Good evening, Rohit. Right, now if you see this Chomsky hierarchy, if you see, तो यहाँ पे you will notice that we have how many types of languages and what all, by what all machines they are recognized, ठीक है. So if you see here we have, सबसे पहले we have type 0. Okay, so type 0 is your unrestricted grammar. Okay, so type 0 में we have unrestricted grammar, means there is no restriction on this particular grammar. Each and every type of string is accepted by this, and this is recognized by Turing machine. Okay, good evening, Deepak. So this is the point that you have to remember, that type 0, because many times I have seen that students get confused that whether type 0 is regular language or type 3 is regular language. So you have to remember this point, that type 0 is the unrestricted grammar. Okay, so type 0 is unrestricted, and unrestricted is recognized by Turing machine. Good evening, Nancy. Okay, then we have type 1. Now type 1 is what? Type 1 is context sensitive grammar, CSG जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, CSG. So that is accepted by linear bound automata, that is LBA. तो CSG किससे हो गया? LBA, linear bounded automata. ठीक है, unrestricted किससे हो गया? Unrestricted हो गया आपका Turing machine से. Next we have type 2 grammar, that is context free, that is CFG. और CFG किससे recognize होता है? Very well known, PDA, push down automata. And then type 3 होता है आपका regular grammar, that is accepted by finite automata. So finite automata भी आपके कितने टाइप्स के हो गए? एक होता है deterministic finite automata, एक होता है non deterministic finite automata, और एक होता है null NFA. Right, so ये Chomsky hierarchy आपकी type 0, type 1, type 2, type 3. Type 0 is unrestricted, type 1 is context sensitive, type 2 is context free, and type 3 is regular. Good evening, Lakshmi. Okay. Good evening, Devendra. So ये बहुत ज़रूरी है, because they can ask you in terms of matching also, they can ask you in terms of any question also. So you should know that which type of grammar is recognized by which type of machine, because many times these type of questions, these are very very basic questions, but we generally tend to forget these questions, or we do not focus much on these type of things. ठीक है, so Chomsky hierarchy में we have 4 types of grammars, and these are the types, and these are the machines by which they are recognized: Turing machine, linear bound automata, push down automata, and finite automata. Okay, now next, very important, we have regular expressions. Now we know that what type 3 grammar, that is regular grammar, basically it has what? It has regular expressions by which we can recognize, right? So if you see, these are your basic terms or basic definitions by which we can follow a regular expression. Now what is it? First of all, a regular expression can be recursively defined. Now you have to remember this: null. ठीक है, null is a regular expression that denotes that the language contain an empty string. This is very very important to know, that if I have null, if I have epsilon, ठीक है, so it means that the language is having an empty string. Okay, language empty नहीं है, language में एक string है जो empty है. Okay, but अगर phi है आपका regular expression, if your regular expression is phi, this means that the language is empty. Okay, good evening, Sudhir. So this is very important, very very important point जो आपको पता होना चाहिए, that if I am saying this means that language contains empty string. ओके, मतलब कि लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग है जो एम्प्टी है, बट इफ आई एम सेइंग दिस
this means that language is empty. So this is very important. यहाँ पे चीजें बहुत confusing हो जाती हैं कभी कभी. Many people are very confused by these 2 points कि what does this denotes and what does this denotes. So null is mainly basically means that the language contains empty string and phi means that language is empty. तो यहाँ पे देखो null के केस में I'm writing that language of null contains null. That is, my language is containing a string that is empty, and phi means that the language is empty. ये difference clear हो everyone? This difference is clear to everyone, right? Then we have x plus y. Now, if I am having a regular expression that is x plus y, generally we have this type of regular expression a plus b. So what does this denotes? It denotes that the language, it contains all the strings of x and all the strings of y, where lx plus y equal to L of x union L of y. Matlab that if I am having a plus b, so I am trying to say that the language where all the strings of a are united or union by all the strings of b. So this is your union. So plus means union. And then I have x dot y. So if I have x dot y, it basically means concatenation. So L, language of x concatenated with language of y. So that is language of x concatenated with language of y. कहाँ पे है सिंबल ये? अब है. Okay, Sudhir, thank you so much. I hope कि you are able to understand every point what I generally teach. अब है ये सिंबल कहाँ पे है? ये वाला सिंबल जो आपने मुझे भेजा है. This symbol generally denotes power. ये वाला सिंबल जनरली हम पावर के लिए यूज करते हैं यूजुअली. यहाँ पे फिलहाल इस स्लाइड पे तो यहाँ पे कहीं भी मुझे ये दिख नहीं रहा है. अगर कहीं पे आपका ऐसे लिखा है दैट 2 ऐसे करके, so this basically means 2 raised to power n. ये वाला सिंबल हम जनरली यूज करते हैं नल. नल के लिए आप साइलेंट कुछ भी बोल सकते हो आप. तो ये वाला सिंबल है ये जो है ई टाइप का सिंबल जो होता है ऐसे वाला, दैट जनरली डिनोट्स नल. ये वाला सिंबल बेसिक इसकी मैथमेटिकली अगर आप देखो तो दिस डिनोट्स पावर. कहीं कहीं पे अगर इफ दे आर यूजिंग दिस फॉर नल ऑल्सो देन दे विल मेंशन इट कि दिस डिनोट्स नल. ओके, ठीक है, ये समझ में आया सबको? ये वाली चीजें समझ में आई. सबसे इंपॉर्टेंट इज एम्प्टी लैंग्वेज एंड एम्प्टी स्ट्रिंग. यहां तक क्लियर है एवरीवन? Okay, next, now this is basically what you can understand by these are your regular expressions. ठीक है, these are the regular expressions and this is the language that what a particular regular expression means. Now first let us see this one. ठीक है, this one a plus b whole star. So first see this one everyone. This regular expression is universal to everything. मतलब if अच्छा one more thing that this L means that language. ठीक है, and this symbol what does it mean? What does this symbol mean? This type of E, वैसे तो this means summation. ठीक है, but in terms of TOC what does this symbol mean? I'll draw it very more clearly if you want me. What does this symbol means if I'm drawing something like this? वैसे तो it generally means summation, but TOC के terms में हम इसको क्या बोलते हैं? This basically means that alphabet, right? This means that कि in your language the alphabets that are being used are these two. नहीं निशा आज नहीं है, 5000 क्वेश्चन की सीरीज आज नहीं है, वो हम कल करेंगे. ठीक है, this basically means alphabet in terms of TOC especially. ठीक है, TOC के टर्म्स में ये जो आपका सिंबल है इट रिप्रेजेंट्स अल्फाबेट. सो दिस मीन्स दैट माई लैंग्वेज L,
agar if I am writing that this sigma is equal to a comma b, so this means that my alphabet that I'm using in language, suppose the languages that I'm using is a and b. so ये terms हैं जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए when you're dealing with आपके जो कंसेप्ट हैं टीओसी के, उसके कंसेप्ट आप डील करोगे. सो यू शुड नो दैट कि लैंग्वेज एक्स में जो अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं दे आर ए एंड बी इफ दिस इज मेंशन्ड ओवर देयर. ओके, सो यहाँ पे व्हाट इज द लैंग्वेज, व्हाट आर द अल्फाबेट्स, ए एंड बी आर द अल्फाबेट्स. ठीक है, सो इफ आई एम हैविंग ए प्लस बी, आई होप यू ऑल नो दिस, द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस. I hope you all know the difference between these two. This is clean closure and this is clean star. What is the difference between these two? Anyone? What is the difference between these two? Yes, so clean closure, it accepts null. ठीक है, so if I am saying a star, a clean closure, okay, so the language will contain null and all the possible combinations of a. This is what is clean closure. Okay, and this clean star, it do not accept null. Okay, so if I'm saying a plus, so it will have all the strings a, double a, triple a, but not null. So you can think of this ki if I'm writing this a star, right? So a star basically is what? A star is a raised to power n, where n is greater than equal to 0. Yes, and a plus is a raised to power n, where n is greater than equal to 1. Right, so this is clean closure and clean star के बीच का difference. Okay, right, plus has no null, star means any number of strings used with null, right, and star 0 or more. ठीक है, so this is what is your star and plus. So if you see here a plus b whole star, so what is written? They are saying set of string of a's and b's of any length including null string. So basically आपकी a plus b star जो है it is a universal thing, universal regular expression है for a and b, that is it is accepting any possible combination of a and b. Clear? null a b a b a b b b a, मतलब अब आप you can understand, you can think like this कि a plus b whole star है, so this means that I can use a before b only. No, if I have a plus b whole star, this means I can use any combination, so I can combine b and a as well, so b a भी valid है. यूनियन है बेसिकली, यूनियन, सो यूनियन में आप x यूनियन y कर रहे हो, so x को पहले ले सकते हो या y को भी पहले ले सकते हो. सो दिस इज व्हाट इज a plus b होल स्टार. ओके, अब आप ये वाला देखो सेकंड, यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 0 plus 1 0 स्टार. नाउ यू हैव टू नोटिस दिस ओवर हेयर, यहाँ पे जो स्टार है, ओके, ये जो स्टार है इट इज ऑन दिस 0 ओनली, पूरी स्ट्रिंग पे नहीं है. गुड इवनिंग विनीता. ओके, सो ये जो 0, ये जो स्टार है इट इज ऑन दिस 0 ओनली, नॉट ऑन द एंटायर एक्सप्रेशन. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो सिंगल 0 आपका अलाउड है. अब देखो 1 0 स्टार है, सो दिस मीन्स दैट आई कैन हैव सिंगल 1 ऑल्सो, right, or I can have 0 also, or I can have multiple zeros as well. So this is your 1. अच्छा, one more thing, अब एक चीज और, try to understand this. यहाँ पे था a plus b whole star, right, यहाँ पे star can be anything. ठीक है, so इसको अगर मैं suppose I'm saying that a plus b, a plus b, a plus b, right, so I can have, suppose I can have a
बी, अगर मैं स्टार को 3 टाइम्स लिखूं, देन आई कैन हैव ए ए बी, राइट, आई कैन हैव बी ए बी इफ माई स्टार इज 3 टाइम्स, सपोज, ठीक है, दैट स्टार की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 रखी है, ठीक है, और आई कैन हैव बी बी ए एंड सो ऑन, yes or no. तो यहाँ पे अब इफ आई एम सेइंग, इफ आई एम राइटिंग लाइक 0 + 1 0 स्टार, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप मुझे ये बताओ, क्या मेरी ये स्ट्रिंग वैलिड है? Yes. Now if I'm saying ठीक है, अब अगर मैंने ये लिखा है, ओके, सो दिस मीन्स दैट आई कैन हैव, इसमें मुझे बताना, ठीक है, इसमें बताना क्या ये वाली स्ट्रिंग वैलिड है? a + b b होल स्टार में क्या b a वैलिड है? ये वैलिड हमने पढ़ लिए, ये वैलिड है हमने पढ़ लिया, क्या ये वाली चीज वैलिड है? इज दिस वैलिड? सी, यहां पे इफ देयर वुड हैव बीन अ स्टार ओवर हेयर, okay, then I could have written it as a plus bb star and a plus bb star, ठीक है, बट यहां पे there is no star, means I can have multiple values of b because b पे star है, but I cannot put a behind this thing, मतलब this is not valid. Why this is not valid? Try to understand this. क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे we were having star means we could have used this multiple times, a plus b a plus b a plus b करके, right? अगर star को हम 3 times place कर रहे हैं तो यहाँ पे we can only have a, we can have multiple a's, yes or no? multiple a हो सकते हैं, multiple a हो सकते हैं, क्या मल्टीपल ए हो सकते हैं? नो no. अगर आप यहां देखो, यहां पे इफ यू सी 0 + 1 0 स्टार, सो 0 कैन अकर ओनली वंस, 0 पे स्टार नहीं है, गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए मैं आपको ये वाला पॉइंट समझा रही हूँ, 0 पे अगर स्टार होता, इफ इट वुड हैव बीन 0 स्टार + 1 0 स्टार, देन मल्टीपल जीरोस वुड हैव बीन अलाउड, बट यहाँ पे 0 पे कोई स्टार नहीं है, इसलिए 0 सिर्फ एक सिंगल टाइम अकर होगा, फिर 1 0 स्टार है तो 1 सिंगल 1, देन 1 एंड मल्टीपल टाइम्स ऑफ जीरोस, ठीक है, सो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इफ यू आर नॉट हैविंग दिस क्लीन क्लोजर, देन यू कैन नॉट यूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 1 स्टार है, सो 1 1 स्टार का मतलब क्या हुआ? दैट इज इफ आई कैन हैव 1 1, आई कैन हैव अगेन 1 1, आई कैन हैव अगेन 1 1. सोनिया प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो, बिकॉज मेरे एंड पे फोटो बिल्कुल क्लियर आ रही है, आई कैन सी दैट फोटो इज वेरी क्लियर, ठीक है, सो एक बार बस रिफ्रेश कर लो, और यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर वीडियो, इसलिए शायद ब्लर आ रही है फोटो, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इस वाले में, इफ यू सी इट ओवर हेयर, यहाँ पे इट इज 0 + null 1 + null, ठीक है, सो आई कैन हैव फर्स्ट, आई कैन हैव 0 1, अगर मैं इसको इससे करूं 0 1 मेरे को अलाउड है, देन अगर आप इसको ऐसे देखो, सो इट इज 0 समथिंग नल, सो 0 आ गया, 0 अलाउड है, देन 1 एंड नल, 1 सिंगल 1 अलाउड है, मतलब बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग कि वी कैन हैव, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, वी कैन हैव 0 + नल अगर है, और
1 प्लस नल अगर है, ठीक है। सो यहां से हमने क्या लिया 0, यहां से हमने क्या लिया 1, तो एक हमारी स्ट्रिंग हो गई 0 1। फिर यहां से हमने क्या लिया 0, यहां से हमने क्या लिया नल, तो एक हमारी दैट इज 0 ओनली, 0 हो गया। फिर यहां से हमने क्या लिया नल, यहां से हमने क्या लिया 1, सो अगेन वी हैव 1, और फिर नल और नल दैट इज नल। सो हमारी इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए लैंग्वेज में सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं, एक तो नल, एक 0, एक 1 और एक 0 1। 1 0 भी इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? So I hope now you know that how you have to read regular expressions and how you have to expand regular expressions. What I'm saying is that ki if I have 0 plus null and 1 plus null, if I have this type of regular expression, right? So this type of regular expression में what are the strings that will be accepted in the language? 0 1 मतलब 0, क्योंकि I have told you if you have x dot y, so this is what concatenation. So 0 1, एक string आपकी 0 1 हो गई, 0 1, correct. Then एक हुआ 0 and epsilon और 0 और null, so 0 और null is 0 only. फिर एक हुआ null and 1, so null concatenated by 1 that is 1 only. फिर एक हुआ null concatenated with 1 that is null only. So इस language में क्या क्या accepted है? 0 1 0 1 and null. अब अगर somebody will say that is with this regular expression can I obtain 1 0 as a string? No, I cannot obtain 1 0 as a string with this particular रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे यही चीज है, अगर आप देखो सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स हैं जो लैंग्वेज का पार्ट है, नल 0 1 एंड 1 0 1, ठीक है। फिर आप यहां देखो दिस वन, लास्ट वन, ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी होल स्टार, स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज ऑफ इवन लेंथ ओनली, सिर्फ और सिर्फ इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स ही आप ऑब्टेन कर सकते हो बाय कॉन्कैटिनेटिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स सच एज ए बी बी इंक्लूडिंग नल। वाई नल? बिकॉज हमने यहाँ पे बाहर क्लीन क्लोजर लगा दिया है। सो नल, इसमें आपका नल भी एक्सेप्टेड होगा, नल डबल ए बी बी और ए बी, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन, मतलब इवन लेंथ की स्ट्रिंग्स ही सिर्फ और सिर्फ जनरेट होंगी। ये समझ में आ गया एवरीवन? इतना क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट लेट अस सी अब कुछ आइडेंटिटीज रिलेटेड टू योर रेगुलर एक्सप्रेशंस। देयर आर वेरी आइडेंटिटीज जो रेगुलर एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई, व्हेन वी हैव टू सिंप्लीफाई आवर रेगुलर एक्सप्रेशंस वी यूज दीज आइडेंटिटीज। नाउ लेट अस सी व्हाट आर दोस। सबसे पहले फाई का क्लोजर, फाई मीन्स एन एम्प्टी लैंग्वेज, ओके। सो क्लोजर ऑफ एम्प्टी लैंग्वेज इज null, ठीक है। क्लोजर ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑल्सो null, ठीक है। सो इफ आई एम टेकिंग 3 क्लोजर ऑफ फाई दैट इज एम्प्टी लैंग्वेज दैट इज ऑल्सो null, एंड क्लोजर ऑफ null एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑल्सो null. R closure means I have a regular expressions and both are same regular expressions, ठीक है। R basically denotes a regular expression. So if I'm having same R null, so I can write it as R null R. So this is the way of writing. I can interchange this R and bring it over here and make it, turn it over here. Now if I have R star, matlab I'm having the same regular expression and I am repeating it with this, so I can write it as a single R star. Then I have R star bracket star. So this simply means R star only. Then this one, PQ star P.
then it means that you can write it as p qp whole star. सो ये आपकी दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बिकॉज इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. a प्लस बी होल स्टार इज इक्वल टू a स्टार b स्टार होल स्टार, a स्टार प्लस b स्टार होल स्टार, और a प्लस b स्टार होल स्टार, और a स्टार b a स्टार होल स्टार. सो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज वॉट यू शुड लर्न बिकॉज questions on this particular identity are asked every time. विनीता, जो 2021 के जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं जो हमारी 5000 की सीरीज चल रही है उसी में इंक्लूड. ठीक है. वाई? बिकॉज कि अब उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपके जो हैं दीज आर यूनिट वाइज, सो आई इंक्लूड एंड मर्ज देम विद 5000 सीरीज. ओके, ठीक है एवरीवन. फिर नेक्स्ट हमारे पास r प्लस 5. प्लस हमें पता है कि प्लस इज जनरली यूज इन केस ऑफ यूनियन. जब हमें यूनियन करना होता है तो हम प्लस का यूज करते हैं. सो इफ आई हैव अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड आई एम डूइंग यूनियन विद 5. 5 क्या है हमारा? 5 एक हमारी एम्प्टी लैंग्वेज है. सो इट इज इक्वल टू 5 प्लस r विच इज इक्वल टू r ओनली. सिमिलरली इफ आई एम हैविंग r कॉन्कैटिनेटिंग विद नल, दैट इज इक्वल टू, ये जो मैंने आपको बताया, दैट इज इक्वल टू 1 ओनली. सो यहाँ पे वही चीज है कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपने ले रखा है उसको आप नल से कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, सो दैट इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन ओनली. यहाँ पे ये आपके कुछ लॉज हैं. r प्लस आर इक्वल टू आर आइडेंटिपोटेंट लॉ है. l m प्लस n, तो हमने उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं. m प्लस n l जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. फिर नल प्लस आर आर स्टार इज इक्वल टू नल प्लस, यहाँ से हमने अगर आप देखो आर आर स्टार, दिस वन, ये तो इसको हमने आर स्टार आर लिख दिया और उसको हम ऐड करेंगे नल के संग, दैट इज यहां से, सो वो आर स्टार ही आएगा. सो दीज आर योर फ्यू आइडेंटिटीज जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए. क्लियर है ये वाला पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये वाली है बिकॉज फ्रॉम दिस क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्क्ड. डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो यू शुड नो दीज टाइप ऑफ पर्टिकुलर आइडेंटिटीज. क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, so next, now this is one question. Write the regular expression for the language accepting all the strings which are starting with 1 and ending with 0 over the alphabet 0 and 1. So tell me, आप बताओ इसका regular expression क्या होगा? All the strings starting with 1 and ending with 0. Ma'am, what is the difference between third property and last property? Let me check. Third property ये है आपकी आर आर शाह. सी, इसमें कुछ डिफरेंस ये है कि अगर आप इसको नल के संग ऐड करो, ठीक है, अगर आप नल के संग इफ यू आर एडिंग एनीथिंग यू विल गेट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास ऐसी कुछ है आर आर स्टार, सो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आर स्टार आर के साथ, एंड इफ आई एम एडिंग इट विद नल सो आई गेट आर स्टार. ओके, क्योंकि देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आर स्टार में नल आ रहा है, ठीक है, और इस आर में अगर आप नल ऐड करो तो आर स्टार, नल बेसिकली ऐड हो गया ना आपका, सो दैट इज योर नल ओनली. सो यहाँ पे आर स्टार आपका फाइनल आउटपुट आएगा अगर आप नल ऐड कर रहे हो तो. Yes, everyone, give answer for this question. You have to tell what will be the regular expression for any string that is starting with 1 and ending with 0. With alphabet 0 and 1. एक आंसर आया मेरे पास. What about others? बाकी भी बताओ. आंसर्स दो अपने, फिर I'll discuss कि whether your answer is right or whether your answer is wrong. एंड अगर रॉन्ग है तो वो क्यों रॉन्ग है, दैट इज ऑल्सो आई टेल यू. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि वी हैव आवर रेगुलर एक्सप्रेशन इन आवर माइंड एंड देन वी थिंक कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन भी सही है. सो देन वी हैव टू फाइंड अ काउंटर एग्जाम्पल टू
proof that your why your regular expression is wrong. If it is wrong, okay, so please everyone do give your answers as well, so that we can discuss ki what are the regular expressions, whether this regular expression is right or not. So do you want me to give you more time? Is anyone answering? Vinita ke alawa, is anyone giving an answer, willing to give an answer? चलो, सो एक आंसर आया है 0 + 1 स्टार, और बाकी सब. So first of all, let's see the language. Everyone, please give your answers. Okay, I need this session to be interactive because वरना ये बहुत boring session हो जाएगा अगर सिर्फ मैं ही बोलती रहूंगी तो. So they're saying regular expression for language accepting all the string starting with 1 and ending with 0. So what will be the smallest string? Smallest string will be 1 0, right? Then I can have anything 1 1 0. I can have 1 0 0. I can have 1 0 0 और 1 0 1 0 ऐसे करके एंड सो ऑन. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट. एक हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, लेट्स डिस्कस दोस. ठीक है, सबसे पहले लेट अस डिस्कस 1. सो अब यहाँ पे देखो, यू कैन हैव फर्स्ट आपको 1 रखना है, लास्ट आपको 0 रखना है. उसके बीच में यू कैन हैव एनीथिंग. यू कैन हैव नल ऑल्सो, you can have 1 also, you can have 0 also, you can have any possible combinations of 1 and 0. so क्या मैं इसको 0 + 1 होल स्टार बोल सकती हूँ? मतलब basically what I have to, how will I generate a regular string from this is, I know that this is the smallest string possible. मतलब एक स्टार्टिंग में 1 आएगा और एंडिंग में 0. नेक्स्ट आई हैव टू सी कि व्हाट शुड कम इन बिटवीन. सो यहाँ पे आई कैन हैव नल. यहाँ पे अगर आप देखो तो बीच में इट इज समथिंग लाइक दिस, दैट इज गिविंग यू 1 and 0. यहाँ पे बीच में क्या है 1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0 1. मीन्स एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 इज पॉसिबल. यहाँ पे आपका 1 1 0 0 भी आ सकता है, राइट? सो इसीलिए द करेक्ट आंसर टू दिस इज दिस वन, दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. But some other regular expressions have also been answered. Let's check those also. So एक है आपका 0 + 1 का स्टार. Now see, सबसे बड़ी चीज इसमें आपकी नल इंक्लूड हो रही है. सिर्फ और सिर्फ 0 की स्ट्रिंग्स भी इंक्लूड हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 की स्ट्रिंग्स भी इंक्लूड हो रही हैं. ऐसी स्ट्रिंग्स भी इंक्लूड हो रही हैं जो 0 से स्टार्ट होकर 1 से एंड हो रही है. दिस इज बेसिकली अ यूनिवर्सल, आपकी यूनिवर्सल हो गई. बट यहाँ पे दे हैव मेंशन अ कंडीशन starting with 1 ending with 0. so you have to keep this condition in mind. ठीक है, अब उसके बाद जतिन आपने बोला 1, ठीक है, 0 स्टार 1 स्टार 0. ठीक है, अब जतिन आप मुझे बताओ, क्या इसमें आप ये वाली स्ट्रिंग 1 1 0 0 ये वाली स्ट्रिंग वैलिड करवा सकते हो? आपके इस रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या ये वाली स्ट्रिंग इंक्लूड हो पाएगी? बिकॉज हमें कोई सी भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, बट द थिंग इज दैट कि स्टार्टिंग 1 से हो 0 से हो, करेक्ट. बट हमें ये तो देखना है कि सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं. ये वाली स्ट्रिंग आपकी इस रेगुलर एक्सप्रेशन में एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी. स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद 1 एंडिंग विद 0 वाली स्ट्रिंग तो ठीक है, बट जो बाकी स्ट्रिंग्स जो हैं इसी टाइप की, वो आपकी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी. दैट इज वाई दिस एक्सप्रेशन इज रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1 0 + 1 होल स्टार 0. ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये वाला पॉइंट? क्वेश्चन क्लियर हो गया एवरीवन? So all those who gave the answer, I hope your doubt is also clear, and all those who didn't give the answer, I hope 1 + 0 star. Yes, Lakshmi, 1 + 0 star and 0 + 1 star are same, because 1 + 0 star, देखो 1 + 0 star है आपका, ठीक है. This means I can have 1 + 0 1 + 0 1 + 0. तो अगर मैं सपोज 3 लेके चल रही हूँ, सो आई विल हैव 1 0 0, है ना. और अगर मैं 0 + 1 स्टार लूँ
सो इफ आई एम हैविंग 0 + 1, 0 + 1, 0 + 1, ठीक है, यहाँ से सपोज आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग, ये मैंने नहीं लिया यहाँ से मैंने, और मैंने एक और ले लिया 0 + 1, बिकॉज वी आर टेकिंग टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स. सो यहाँ से मैंने लिया 1, और मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ. सो आई डोंट, इफ यू वांट आई कैन टेक फ्रॉम हियर ऑल्सो, सपोज यहाँ से ही. सो यहाँ से आपने यहाँ से लिया था 1, यहाँ से लिया था 1, यहाँ से लिया 0 एंड 0, सो 1 0 0. अब यहाँ से आपने सपोज यहाँ से 1 ले लिया, ये वाला, फिर यहाँ से 0 और यहाँ से 0. सो ये बेसिकली सेम ही है, इधर a + b और b + a बोथ आर सेम, मतलब स्टार होना चाहिए, बट a + b स्टार होल स्टार एंड b + a होल स्टार होना चाहिए, तो आपकी स्ट्रिंग्स सेम है. ओके, नेक्स्ट लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. नाउ write the regular expression for the language starting with a. ठीक है, starting with a but not having consecutive b's, मतलब कि a से हमेशा स्टार्ट हो बट दो b कभी भी एक साथ ना आए. You have to find the regular expression for that language where that language the strings are starting with a but no b's are coming together, no consecutive b's. Good evening, Devinder. एंड रिमेंबर, जब तक वो ये ना बोले क्वेश्चन में दैट योर स्ट्रिंग योर लैंग्वेज शुड इंक्लूड नल, तब तक यू विल मेक श्योर कि आपकी जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हो उसमें नल ना इंक्लूड हो. अगर उन्होंने मेंशन किया है देन यू कैन राइट कि नल इंक्लूड हो रहा है, बट इफ दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग यू विल नॉट इंक्लूड नल इन योर रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, सो वन लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज. सो लैंग्वेज यहाँ पे क्या हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है सिंगल ए, राइट, सिंगल ए लैंग्वेज में एक्सेप्ट हो सकता है, और ए बी एक्सेप्ट हो सकता है, राइट. क्या सिंगल बी, कैन आई एक्सेप्ट सिंगल बी ऑल्सो, कैन आई एक्सेप्ट सिंगल बी, कैन सिंगल बी बी अ पार्ट ऑफ दिस गिवन लैंग्वेज. सिंगल बी इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा, वाई, बिकॉज स्टार्टिंग विद ए है, ठीक है. देन आई कैन हैव ए बी ए, then I can have A B A B, I can have, right, then I can have A B A A B, I can have, right, like this I can have any number of strings. Okay, let's check with the answers. So पहला एक जो आंसर आया वो है A star plus B, यही है ना आंसर, यही है ना आपका एक्सप्रेशन. सी, अब इसमें सिर्फ सिंगल बी आ रहा है आपका. इसमें अगर आप देखो सो यू कैन ओनली हैव अ सिंगल बी, मतलब या तो हैव यू कैन हैव एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल ए भी चल जाएगा, राइट, डबल ए भी चल जाएगा, ठीक है, यू कैन हैव एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ ए, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बी, मतलब ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगी, राइट. सो दिस दैट इज वाई दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है. देन वन अनदर वन इज ए स्टार बी. अब सिमिलरली यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है एक तो बी, यहाँ पे भी ये आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट कर रही है बी, और बी आना नहीं है. यू शुड हैव अ स्ट्रिंग दैट शुड स्टार्ट विद ए ओनली. सो ये इसलिए ये वाली भी गलत हो जाएगी, ठीक है. ये दो तो हमारी गलत हो गई. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. क्या है नेक्स्ट हमारी, ए
ए स्टार बी ए स्टार। ओके, तो सिंगल ए आपकी एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी इसमें, राइट? सिंगल ए आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज ये आपने ए रखा, यहां से आपको बी लेना ही पड़ेगा। यस, तो सिंगल ए एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। फिर जो आई नेक्स्ट ए स्टार बी, अगेन सिंगल ए, इसमें भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, राइट? फिर एक आई ए, यहां पे आपने लगा दिया स्टार। चलो ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्टार लगा दो तो ठीक है, आपने सिंगल ए एक्सेप्ट कर लिया। ओके, फिर अगर मैं इसको बोलूं ए बी, तो ए बी चलो आपकी एक्सेप्ट हो गई। ए, ये नल रहा, बी। अब देखो, ये तो आपका ए एज इट इज आ गया, ठीक है। स्टार आपने इस पे लगाया ना, खाली इस पे लगा हुआ है स्टार, तो अब आप मान लो ये लो ए स्टार बी ए स्टार, फिर आपने यहाँ पे फिर ले लिया ए स्टार बी ए स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ए तो रहा, यहां से सपोज इस वाले से मैंने सिर्फ और सिर्फ बी लिया, ये भी नल है हटा दिया, ये भी नल है हटा दिया। इस वाले से भी सिर्फ और सिर्फ ये भी नल हटा दिया, ये भी नल हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ बी लिया, ए डबल बी हो गया। गेटिंग द पॉइंट? सो ए डबल बी तो एक्सेप्ट होना नहीं चाहिए, इसीलिए ए डबल बी ये वाली भी आपकी एक्सप्रेशन गलत हो गई। फिर क्या करें, अब क्या एक्सेप्ट कैसे बनाए इसे? सबसे पहले तो व्हाट वी डिड, वी नो कि हमारे पास हम वी कैन नॉट हैव अ नल, राइट? सबसे पहली चीज वी शुड नो इज वी कैन नॉट हैव अ नल। सो व्हाट वी डिड, हाँ वही ए बी बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जो होना नहीं है ना। सो अब सबसे पहले वी रोट ए प्लस। अब यू हैव टू नोटिस दिस कि आपकी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, आपकी जो स्ट्रिंग बन रही है, इट कैन हैव ओनली ए बी। मतलब क्या मतलब है मेरा, कि ए बी का अगर आप ए बी एक साथ रखोगे, सो नेक्स्ट में आप ए बी आएगा आपका, और इसमें आप स्टार की जगह प्लस कर दो। जैसे आपने प्लस किया, यू विल कम टू नोटिस कि एक तो नल इंक्लूड नहीं हो रहा, सबसे पहले सिंगल ए इंक्लूड हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या सिर्फ ए की स्ट्रिंग्स इंक्लूड हो रही हैं? यस, ए की स्ट्रिंग्स भी इंक्लूड हो रही हैं। नेक्स्ट आई कैन हैव, अगर मैं देखूं ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, राइट? सो मैंने यहां से लिया ए बी, यहां से मैंने लिया ए, और फिर मैं ले लूं ए प्लस ए बी, तो यहां से मैंने लिया ए बी, तो ये मेरी ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई। मतलब बेसिकली व्हाट आई हैव टू कीप इन माइंड, आई हैव टू कीप इन माइंड कि दो बी कभी भी एक साथ ना आए और सारी की सारी स्ट्रिंग्स ए से ही स्टार्ट हो। तो इस वजह से जो मेरा फाइनल, जो मेरी स्ट्रिंग, जो रेगुलर एक्सप्रेशन दी, सी आपके एग्जाम में यू विल बी हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस, तो वहां पे आपके लिए इजी होगा। बट यहाँ पे विदाउट ऑप्शंस मैं इसलिए आपसे करवा रही हूँ, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर थिंकिंग पावर कि हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस को जनरेट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो क्या किया हमने, वी हैव यूज्ड ए बिकॉज वी नीड स्ट्रिंग्स ऑफ ए ओनली, सो हमने ए का यूज किया, एंड देन वी नो दैट ए बी हमारी नेक्स्ट। सी whenever you are writing a regular expression or checking for a regular expression, what you have to do is always go for the smallest regular expressions. सबसे छोटा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्या वो आपका बन रहा है, उसके बाद बड़े पे जाओ, ठीक है। अब इफ समवन थिंक्स कि ए बी ए कैसे बनेगा, सो ए बी ए कैसे बनेगा, फर्स्ट आई टेक ए प्लस ए बी एंड देन आई टेक ए प्लस ए बी, ठीक है। यहां से इस वाले पार्ट से मैंने ए बी पिक किया और इस वाले पार्ट से मैंने ए पिक किया, सो ए बी ए बन गया। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? अब समझ में आया एवरीवन कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को जनरेट कर सकते हैं? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस?
व्हाट अदर्स? कोई डाउट इस इन क्वेश्चंस में? कोई डाउट इन दोनों क्वेश्चन में? फिर वील मूव टू द अदर क्वेश्चंस आल्सो. ओके, नेक्स्ट. अब ये जो स्ट्रिंग है आपकी, देखो यहाँ पे बहुत इजी है ये. राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज एल ओवर जो आपका अल्फाबेट है 0 और 1 सच दैट ऑल द स्ट्रिंग्स डू नॉट कंटेन सबस्ट्रिंग 0 1. मतलब 0 1 सबस्ट्रिंग नहीं होना चाहिए. आपकी कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, 0 1 नहीं होना चाहिए बस. Means you have to make sure that whatever strings you are using, whatever strings you are generating, all the strings must be of the type something like जिनमें 0 1 include ना हो. वन स्टार प्लस 0 स्टार प्लस 1 स्टार प्लस 0 स्टार. सी वाई, मतलब इसको कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, 1 स्टार प्लस सी. यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है दैट इज मेंशन दैट you should not contain 0 1. The only condition that they are following is that you should not contain 0 1. Nothing else is said. ठीक है, so this means that my language can contain null also, right? Because null does not contain 0 1. It can have single 0, it can have single 1, it can have 1 0, it can have 1 1, it can have 0 0 0, it can have 1 1 1, it can have 1 0 1 0, right? And no, it cannot have 1 0 1 0. Why? Because then it will have 0 1 also. So 1 0 1 0 आपकी जो ये है वो पॉसिबल नहीं है, right? और it can have, मतलब it should have anything that should not have 0 1. ठीक है, so now let's talk about जो सबसे पहले जो आया है वो है 1 स्टार 0 स्टार प्लस 1 स्टार 0 स्टार. इसमें हमने प्लस क्यों लगाया? आप इसको सिंपली अगर आप ऐसे रख रहे हो तो आप इसको सिर्फ 1 स्टार 0 स्टार रखो ना, इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा. हाँ, 1 1 1 0 0 रख सकते हो अगर आप ये रख रहे हो, क्योंकि सी इसके बाद अगर आप ये रखते हो, ठीक है, मतलब आपने रखा 1, यहां से लिया 1, इसमें से आपने ले लिया 1 0, ओके, और यहां से अगेन आपने ले लिया 1 0,
तो 0 1 की स्ट्रिंग हो गई, राइट? इसलिए +1 0 वाला कंसेप्ट हम नहीं रखेंगे. We can only have simply, we can have this thing that is 1 star and 0 star. फिर एक और एग्जाम्पल, जो एक और स्ट्रिंग जो आपने भेजी है, दैट इज 0 + 1 star 0. अगेन यहाँ से अगर आप यहाँ से आप 1 ले लो और यहाँ से 0, 1 star. अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि 1 star + 0 star + 1 star 0 star, है ना? अच्छा, चलो मैंने यहाँ से 1 ले लिया, मैंने यहाँ से 0 भी ले लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम. यहाँ से मैंने 1 ले लिया और ये मैंने नल रख लिया. 1 0 1 हो गया और 0 1 स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, जो नहीं होनी चाहिए. यस, यस, राइट. So we can simply keep 1 star 0 star only. Why we can simply keep 1 star 0 star? Because it will have any combinations of 1 followed by any combinations of 0. There are no chance that you can have 0 followed by 1. 1 star 1 0. Okay, चलो एक और एग्जाम्पल है, 1 star और 1 0. नाउ अब मुझे बताओ इसमें नल कैसे एक्सेप्ट करोगे? सबसे पहले तो नल एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 की कॉम्बिनेशंस की स्ट्रिंग्स भी एक्सेप्ट नहीं होंगी. मतलब यू कैन नॉट एक्सेप्ट नल, you can neither accept all single 0, you can neither accept single 1, you can neither accept all combinations of 0. Getting my point? So we have to make sure ki the question is that the string should not contain 0 1. Rest all strings should be accepted. सिर्फ 0 1 की strings accept ना हो जिनमें 0 1 हो, but rest all the strings with the single zeros और single ones और null और strings having 1 0 वो एक्सेप्ट होनी चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए ये वाली चीज भी आपकी गलत है, ये वाली चीज भी आई थिंक सबा, आई थिंक अब आप क्लियर हो गया होगा कि ये वाली स्ट्रिंग भी क्यों गलत है, और ये वाली स्ट्रिंग भी आई थिंक पुष्पा आप क्लियर हो गया हो कि क्यों गलत है, राइट? आई होप योर डाउट्स आर रिजॉल्व नाउ. सो इसका जो सही आंसर आएगा वो है 1 star 0 star. Any doubt anyone in this question? Any doubt? Any doubt to the strings as well, for the strings as well? Okay. चलो next. So write the regular expression for the language containing the string in which every zero is immediately followed by 1 1. मतलब whenever I am having a 0 in my string, it should always be followed by 1 1. मतलब या तो यही हो या सिर्फ 1 1 की स्ट्रिंग्स हो, ठीक है? आई कैन हैव सिंगल 1 1 ऑल्सो, बट वेन एवर आई एम हैविंग 0 आई शुड ऑलवेज हैव 1 1 आफ्टर दैट. So this is the condition that you have to follow and draw your regular expression.
Okay, 0 plus 1 1 star. चलो let's see. सबसे पहले let's talk about the languages that can be the strings that can be accepted, right? So language में आपका null आ जाएगा definitely, because they are saying that whenever you are having a 0 it should be followed by 1 1. So I can have single 1, I cannot have single 0 because it will always be followed by 0 1 1. I can have combinations of 1, then I can have 0 1 1 1 1, then I can have 0 1 1, and if again I have 0 I should have 1 1. So this is the condition that I have to keep in mind. So first is 0 plus 1 and 1 star. सबसे पहले null is not accepted with this language, right? I cannot accept null. I can accept 1. Then again, if you see, if I am taking 0 from here and I am taking single 1 only, so 0 1 हो गया. I should have at least 0 1 1. सबसे छोटा जो string accept हो रहा है, with this condition if 0 is there it should be 0 1 1. So this is wrong. ठीक है, इसीलिए this one is wrong. Next I have 0 star 1 1 whole star. Okay, null accept हो रहा है, correct. Single 1, I am not able to have single 1 over here, right? तो single 1 भी I cannot have single 1, इसलिए ये वाली string भी गलत हो गई. ठीक है, let's check about the next one, that is 1 plus 0 1 1 whole star. यही है. Okay, so I can have null, right? I can have single 1, right? I can have 0 1 1, right? I can have multiple ones. Yes, I can have multiple ones. How many ones? Whichever ones I want. Then 0 1 1 0 1 1 is also allowed, right? ठीक है, फिर 0 1 1 then 1 is also allowed, right? So the correct answer for this is 1 plus 0 1 1 star. Correct. Yes, okay everyone. I hope this is clear ki why this is the answer, how come this is the answer. All those who gave some other expressions, I hope your doubt is clear ki why our answer was wrong, why our expression was not the one that was matching to this question, and why this is the answer. I think it's clear now. Yes, clear hai everyone? Okay, next. Now let's talk about regular language. ये तो हमारे regular expressions थे. These were regular expressions. Now what about regular language? A language is regular if there exists a finite state automata that accepts it. ठीक है, this is all we know, that if my language is regular, then there should be a finite automata. Now automata can be non-deterministic finite automata or deterministic finite automata. So I hope you know what is the difference between NFA and DFA. So I'll clear that very quickly. When I am dealing with DFA, ठीक है, so if I am saying that this is my state Q naught, so I have my transitions fixed. मतलब कि if I am giving an input A to Q naught, I will reach Q1. If I am giving a B input to Q naught, I will be at B only. But what happens in case of NFA is that with the single input I can have multiple transitions. मतलब if I am giving A to Q naught, I can reach either Q1 or I can stay at Q naught as well. Similarly with B, suppose this is my another state, so this is with B, I can reach over here also, or I can reach to Q1. मतलब this is not fixed, nothing is determined. So DFA says that with every input, with every state, on every state the input you are giving is fixed. But in case of NFA, the input you are giving is not determined, it is not fixed. Okay, with same input you can go to 2 or more than 2 states. So this is the difference between NFA and DFA. So whatever languages
that are determined by these two machines are your regular languages. Okay, so this is your NFA and DFA. Okay, now suppose I am trying to say that I have a, suppose finite automata I'll give you. Okay, I'll draw a finite automata and you have to tell me that what will be the regular expression for that finite automata. Okay, so what we'll do is I'll give you a finite automata and you have to tell me the regular expression for that finite automata. So first finite automata that I have is, I am having a state q naught only. This is the finite automata that I have. You have to tell me what is the regular expression for this particular finite automata. Yes, what is the finite automata? ये आपका finite automata है, ठीक है. So क्या language accept, क्या regular expression बन रहा है इससे? बताओ, समझ नहीं आ रहा वो बताओ कि मैम समझ नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट डू गिव रिप्लाई एवरीवन, तो मुझे पता लगे कि क्या क्या समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो या क्या वजह है. सी यहाँ पे इफ यू सी there is one state, right? That is, now how do we represent the final state? How do we represent the final state? Final state is represented by double circles, right? There is no final state in this and there is no input given to it, so this is an empty language. So regular expression is phi. Okay, phi it is. Regular expression is phi. Why phi? Because this is an empty language. Okay, let's talk about this one. Q naught, then I am having Q1. Q1 is your final state. So what is the regular expression for this? Regular expression for this automata, second one. Correct. Only A. Why? Because only one input is given to this Q naught, that is A, and there is nothing is marked on Q1 as well. So the only correct regular expression is single A raised to power n, where n is equal to 1. Okay Jatin, ये भी आपकी सही है, but you can only leave it as single A only. Okay. Next, Q naught, Q1. What is the regular expression for this?
There are two states, q0 and q1. q0 is your initial state, q1 is your final state, and then I have a comma b. So what is the regular expression for this finite automata? Not ab. ab नहीं होगा. See, try to understand ab क्यों नहीं होगा. ab means that you are having a followed by b. It is a plus b. That is, either you can have a single a or you can have a single b. Now if I draw something like this, q0 followed by q1 followed by q2, and that is your final state. Okay, q2 is your final state and this is your initial state. Here you are giving a and here you are giving b. For this finite automata you will have ab as your regular expression. Yes or no? Why? Because here I have to reach, in order to reach the final state, first I have to read a and then I have to read b. Yes or no? ये clear है? Okay, next. So what is the regular expression for this one? बहुत इजी है इसका तो. Why I am discussing this? Because you should know how to read regular expressions from finite automata as well. ठीक है, so fifth वाले का तो आंसर हो गया very easy, that is a star, right, including null and all possible combinations of a. What about sixth one? What about sixth one? sixth वाले का क्या आंसर होगा? sixth वाले का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? राइट, सो आप इसको बोल रहे हो a then b and b star. ठीक है, एंड अभी we know this that if I have b and b star I can write it as a b plus. Why? Because this means that once this b is occurring, that is for sure, so it will be a b plus, right? समझ में आया कि a b plus क्यों हो गया? Yes, what about seventh one? सेवेंथ वन का क्या हुआ आपका रेगुलर एक्सप्रेशन?
एक जो आंसर आया है दैट इज A स्टार B स्टार. ठीक है, अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो नल हो रहा है इसमें, नल एक्सेप्ट हो रहा है, यस. अब A स्टार B स्टार का मतलब आई कैन एक्सेप्ट सिंगल A, डबल A एज वेल. सो आप यहाँ पे इफ यू सी सिर्फ और सिर्फ A अगर आप रीड करो, सो यू कैन नॉट रीच द फाइनल स्टेट. This means that single A, double A or strings of only A are not acceptable. Your string should be combination of A and B. That is, देखो A B accept हो रहा है, A B A accept हो नहीं होगा, A B A B मतलब only pairs of A B A B A B will be accepted. So इसका जो सही आपका जो आंसर आएगा that is A B whole star. Why? Because your language should accept combinations of AB with null. Null also is acceptable, but your language should accept combinations of AB. A, B, A, B, A, B. Got it? Clear हुआ? Okay, next. Now this is one question. They are saying let L equal to W and W belongs to 0 and 1. ठीक है, W ends with substring 0, 1, 1. So W is ending with substring 0, 1, 1. मतलब it should have always have strings that ends with 0, 1, 1. Anything in beginning and ending with 0, 1, 1. So you have to tell which of the following automata accepts this particular language. So out of 4 automata given to you, you have to tell कि कौन सा automata इसको accept करेगा. Try it. Okay, so the correct answer is option number D. Correct. So let's discuss very quickly why D is the correct answer. So 0, 1, 1 should be the ending. ठीक है, so अगर आप यहाँ पे देखो 0, 1, 1 and then all combinations of 1, 1, 1. So this means I can have 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 and so on. So that is why this is not the correct answer. Then let's talk about this one. So they are saying 0, 1, 1 and then self loop they have put 0 and 1 both. So I can have 0, 1, 1, 0 also, 0, 1, 1, 1 also. So this is also wrong because of this self loop. Then C wala क्यों wrong है? 0, 1, 1. Okay. Then there is a self loop of 1, 1, not self loop, but a loop of 1, 1, 1, 1, 1, 1. If you see this, 1, 1, 1, 1. So that is why, because of this also, this is wrong. I hope this is clear why option C is also wrong, right? Because 0, 1, 1 to hai, but again then they're using 1, 1, 1, 1, 1, 1. So that is why.
And in option D, if you see 0 1 1, then again I have to reach here, then again 0 1 1 or 0 1 1. So that is why the correct answer is option number D. Clear? So this was a question of gate. So I hope now you have understood the concept of this regular language and all. Right, one more question we have. Minimum number of states required in DFA accepting binary strings not ending in 101. So what they are saying, accepting binary strings not ending in 101. You have to find that how many states will be required in DFA such that the strings that are accepted are not ending in 101. Try करो इसको. 3 4 5 4. Okay, so I'll tell you the correct answer is option number B. 4 is the correct answer. Okay, now how come 4 is the correct answer? How to do these type of questions is, first what we will do, we will draw an automata, we will draw a DFA that will accept strings ending with 101. Okay, we will draw a DFA that is going to accept DFA with ending with 101. Okay, so now what we will do first, we will draw, so it will have Q0, then it will have Q1, it will have Q2. So we have to end with 101. So 1 0, and we will have one more, that is B, that will be your final state 1. Okay, now we have to draw other things. So we have alphabet 0 and 1. So 1 की हो गई, 0 की we can keep this 0 0 0 1. Now I have to keep 1 over here. So what I can do, 1 का self loop लगा दूं मैं, right? So 1 1 1 0 1 फिर से सही हो जाएगा. Now Q2 पे I have to give a 0. So if you see, this will be 1 1 1, suppose 0. Now I have to give 1 again. So I can put 1 where? Sorry, I have to put 0. Where I can put 0? I can put 0 on Q0. Yes, so it will be 1 0 0 0 0 1 0 1. Now at Q3 I have to give what? I have to give 0 also and 1 also. So 0 I can give over here. So it will be 1 0 1 0 0 0 0 1. But again I have to give 1 over here, right? So 1 की मैं यहाँ पे दे दूंगी. So what does it says is,
Let's check whether it is accepting all the strings with 101. 101. Then 0 1 0 1 0 1, राइट. सो अगर यहाँ पे 101 है, फिर 0, फिर 1. ओके, देन आई हैव 101, then 101. ठीक है. So this is my DFA, and this DFA is containing the strings that are ending with 101. Now I have to do what? I want a DFA that does not end with 101. So what I'll do, I'll draw its complement. And for complement, what I have to do? For complement, simply I'll convert initial states or all other states to final, and final को I will convert to नॉन फाइनल. ठीक है. इनिशियल की जगह आप इसको नॉन फाइनल बोल लो तो ज्यादा इजी रहेगा समझने में. यहाँ पे आई कैन राइट नॉन फाइनल स्टेट टू फाइनल and final to non-final. So simply what will happen is Q0 will become a final state, Q1 will become a final state, Q2 will become a final state, Q3 will become a non-final state. All the things will remain same. समझ में आया everyone? So how many states are there? There are 4 states that will be required. Yes everyone? This is understood to everyone? Yes. Final to non-final and non-final to final, and then you will get your answer. Correct? Next question. So the following deterministic finite automata recognizes what? Set of all strings containing AB, set of all strings containing AAB, set of strings ending in ABAB, or none. Good evening, Birpal. Correct. The correct answer is option number D, that is none of the above. Because of the reasons you asked in the question, no final state. Since I don't have a final state in this particular automata, that is why this automata recognizes nothing. Okay, so no final state, that is why this automata recognizes nothing. So the correct answer is none of the above. Clear? करेक्ट. सी कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है इसमें, इसीलिए ये आपकी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी. ओके. चलो, लेट मी आस्क फ्यू थिंग्स. ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी आस्क फ्यू थिंग्स टू यू ऑल. Suppose I have a language, suppose something like ANBN, given that n is less than equal to 10 raised to power 10. ठीक है. So is it regular or not? Is this given language regular or not?
Why regular and why non-regular? Agar if you're saying non-regular, then why, and if you're saying regular, then why? You have to give reasons. ओके चलो, एक और लैंग्वेज है. What this is your language A and this is your language B. Do not tell me A regular. आप लोग कह रहे हो A is regular, and what about B? Majority is saying that A is regular. Okay, and what about B? See, always remember that if your condition, okay, if your condition is finite, no matter there is comparison, no matter there is whatever thing, if the comparison is finite, then my grammar will always be regular, my language will always be regular. But if my condition is not finite, right, the condition is not finite, then it will be not regular. ठीक है. So क्या कोई लैंग्वेज रेगुलर है और नॉट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन कि उसकी कंडीशन क्या है. इफ दैट कंडीशन इज फाइनाइट, इट विल ऑलवेज बी रेगुलर. इफ दैट कंडीशन इज इनफाइनाइट, इट विल ऑलवेज बी इरेगुलर. ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये हो गया. Next I have, suppose I have a type of language that is a raised to power I, b raised to power 2 times j, such that I and j are greater than equal to 1. Now, what is this type of language? What is this type of language? Let's say language number C. If this is language C, what is this type? So I can see that the power is infinite. ठीक है, ये this is not finite, correct? But there is no comparison. This A is independent and B is independent. So that is why these are also regular, because they are not depending on each other, right? Next, let's say what about this one? Why not regular? What are prime numbers? Prime numbers are, that is a raised to power 2, a raised to power 3, a raised to power 5, a raised to power 7, a raised to power 11, a raised to power 13, and so on, right? So if I have to find a common difference between them, what is the common difference between these two? Common difference is 1. Between these two, 2. Between these two, 2. Between these, 4. Between these, 2. So if the power is able to form an AP, ठीक है, if
AP अगर फॉर्म हो रही है, if the power is able to form AP, then we say it is regular. But here you can see that this is not an AP. Why? Because common difference is different. यहाँ पे common difference 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, ठीक है, but यहाँ पे 4 हो गया. So we do not have same common difference. That is why it does not form an AP. And because of this reason, this language is not regular. Got this point? ठीक है. Next, if I give you one more question like this, that says, so this one is regular or not? So what if you are able to see, if I keep n equal to 1, so this will be a single a raised to power 1. Then if I keep n equal to 2, it will be a raised to power 4. Then a raised to power 3, it will be a raised to power 9. If n is equal to 4, then it will be a raised to power 16 and so on. Yes, hello Nikhil. Right. So what is the difference? 3. Difference 5. Difference 7. So not regular. And what about second one? What about this second one? If you see second, if I keep n equal to 1, it will be a raised to power 2. Then if I keep n equal to 2, it will be a raised to power 2 square, that is 4. Then 3, it will be a raised to power 8. Then 4, 2 raised to power 4 will give you a raised to power 16 and so on. Here difference is of 2. Here difference is of 4. Here difference is of 8. So again, it is not regular. Right? Correct? Yeah. ठीक है, ये point समझ में आ गए. So this is how you have to find how you can find in powers, in terms of power also, whether your given grammar or given regular expression or given language is regular or not. Okay, so now there is one more concept, that is of converting your NFA to DFA. Now this given diagram is NFA or not? The diagram given to us that you all can see, is it NFA or not? Or is it DFA or what? What is this diagram? Okay Neetu, no problem. It's not at all a problem. कोई बात नहीं. This image given to us is NFA, right? How I can say this NFA? Because see, when I am on Q0, on reading 0, I am at Q0 only. On reading 1, I reach Q1. Okay? When I am at Q1, on reading 0, I am having two possibilities. Either I can stay at Q1 or I have to go to Q2. Similarly, when I am at Q2,
on reading 1, I have two possibilities. Either I can stay at Q2 only or I can go to Q1. So that is why this is your NFA. Okay, nothing, non-deterministic finite automata, as nothing is finite over here. So the topic that we're discussing is converting from NFA to DFA. Now many times questions are asked that from this given NFA, if you want to convert this given NFA to DFA, how many states are required? You tell me if this is a given question. Okay, the question given to us is this, and they're asking you that in order to convert this NFA to DFA, how many minimum states are required? What will be the answer? In order to convert this from this NFA to DFA, how many states will be required? How will be states in the final DFA? The question is, how many states will be there in the final DFA? So how many states will be there? Two. Okay. Ma'am, we have to draw transition diagram first. Yes. First of all, you will draw transition table. Okay. So this is how you will draw the transition table. So what we have this type of table that is having states, input 0. Why input and output is given? Because the alphabets that are being used in this are 0 and 1. So how many states do I have? I have Q0, I have Q1 and I have Q2. Q0 being my initial state and Q2 being my final state. Okay. So on reading input 0, I am at Q0 only, and on reading input 1, I am at Q1. I hope you all know how to construct this transition table. I don't think that there is any problem with this one. Q1 pe when I'm reading 0, I have two options. Either I can go to Q1 or I can go to Q2. Then with Q1 on input 1, I am at Q1 only. Q2 pe on reading 0, I am at Q2. And on reading 1, I have again two options. Either I can go to Q1 or I can stay at Q2. Right. Now as you can see, in DFA, we have to draw a deterministic. Matlab we have to define that at each input, wherever we are going, we have to define. So now you can see that from this transition table, we notice that we have a new entry, that is Q1, Q2. Right. So what we will do is, apart from these three states, we will draw one more state, that is Q1, Q2. And since my Q2 is final state, and in this addition, in this concatenation of states, Q2 is also there. So Q1, Q2 will also become a final state. Got my point, everyone? What I'm saying? In this concatenation of two states, Q1, Q2, why we concatenated them? Because on reading Q1, on reading 0 to Q1, we are able to go to two states. In DFA, we cannot have two transitions. So that is why we will convert it into one transition. So how will my new state, new transition table look like? It will have Q0, it will have Q1, it will have Q2, it will have Q1, Q2 as a new state. So this will be your initial state, and now you will have two final states, एक Q2 and एक Q1, Q2 का combination. So what will be the inputs? This is Q0, this is Q1, this is Q1, Q2, this is Q1, this is Q2, this is Q1, Q2. Now on Q1, Q2 pe, when you are giving input 0, so as you have to see these two things. So where you are reaching Q1, Q2 union Q2.
which you will get Q1, Q2 only. Okay. And similarly with Q1 and Q2, on giving input 1, you have to do union of these two. So what you will get? You will get Q1, Q2 only. So now what you will do? Now you will draw your final automata. So Q0 is your initial state, Q1 is your another state, Q2 is your first final state, and Q1, Q2 is your another final state. So you will start from here. So on reading input 0, you will reach here only. So you will make no change, 0. Then 1 pe you will reach Q1. Q1 pe when you are reading 0, you will reach Q1, Q2. And when you are reading 1, you will be staying at Q1 only. Q2 pe when you will read 0, you will reach here only. And when you will reach Q2 pe, so you can see that input 1 pe you are reaching over here, right? And then this will become Q1 and 0 1 ka self loop will come over here. Okay. Now if you notice one thing, if you are trying to notice over here, that this state Q2, this is not reachable by initial state. I cannot reach Q2 anyhow. अगर हमसे क्वेश्चन में if they are asking us minimum number of states, so you have to keep this in mind that I am not able to reach Q2 from initial state. Most I can reach this and this. I will never be able to reach Q2, so I can remove Q2 from this diagram. Why? Because not reachable by the initial state. Yes or not? So in my question, if they ask me minimal DFA mein how many states will be there, you will say 3 states will be there. If they ever ask you that how many states will be there in minimal DFA, so it will be 3. Why? Because Q2 is not reachable by the or from the initial state. Yes, so 3 states will be your answer. Yes or no? Correct? Got this point? So this is your another question. एक और question है. You have to tell that how many states will be there for this given NFA. How many states in DFA will be there for this given NFA? समझ में आ रहा है वाला कंसेप्ट एवरीवन? आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल. So what we'll do first, we'll draw the table. Okay, so we'll draw a transition table for this. So we have states.
So we have states over here, and then we have input 0 and input 1. Right, so what we will do, we will start by state q0. Q0 is your initial state. So q0, when you're reading 0, you are reaching q0 and q1 both. Right, q0, q1. And when on 1, where you're going? On q1 only. Right, then on q1, when you're reading 0, you are not going anywhere. Right, because there is no transition. So this will be phi. We can name it as phi. And then on q1, we are reaching either q1 or q0. So q0, q1. So now from this, it is clearly visible to us that we have one state, that is q0, q1, and one we are having phi. Now phi can be treated as a dead state or trap state or null state, because in NFA we don't deal with phi. In NFA we don't have, it's not necessary that every time we have to draw a transition for every input. We can leave as well. Okay? But in DFA you have to make sure that every state is having transitions for every input. This is the difference between NFA and DFA. One more difference, NFA mein you can leave input, but in DFA you have to make sure that every state is having every transition for every input. Okay, yeah. So now we have q0, q1, then q0, q1 combination and phi. So what we will do now, we will make another transition table basically, that will have, it will have q0. First it will have q0, then it will have q1, then it will have q0, q1 combination, and then it will have phi. Phi को आप कोई भी और नाम भी दे सकते हो, but let's say it's phi only. ठीक है, you can give any other name except then phi. Then we are having input 0 and then we are having input 1. So now what we have to do, now we have to fill this table. So on 0, yeah, so on 0 where you will reach, 0 पे you will be reaching q0, q1 है ना, because this is q0, q1 only. So 0 पे read करके you will reach q0, q1, and 1 पे read करके you are reaching q1. Then q1 is there, q1 पे 0 पे you are reaching phi, and q1 पे 1 पे you are reaching q0, q1. Let's talk about q0, q1. 0 पे read करके q0, q1 and phi. So what, where this means union करोगे तो कहाँ पे पहुँचोगे? जब आप यूनियन करोगे फाई किसी भी डेड ट्रैप या किसी भी स्टेट के संग फाई के साथ, व्हेन यू विल यूनियन इट विद q0, q1, व्हाट यू विल गेट फाई ओनली. ठीक है, यहाँ पे q0, q1 का यूनियन करो q1 के संग, यू विल गेट q0, q1. देन फाई का इट विल बी फाई एंड फाई ओनली. यस, नो, दिस वन विल नॉट बी फाई, सॉरी, दिस वन विल बी q0, q1, not phi, sorry, q0, q1 only. Yeah. Right. Okay. So if you see, the diagram will be somewhat like, if I try to draw diagrams, it will be having q0. Now this is your initial state and q1 is your final state, and इसमें q0, q1 में भी q1 आ रहा है, so this one also will become your final state. This is your q0. Then q1 is your final state, then q0, q1 is your another final state, and then we have phi as another state. Now we'll draw the transitions for this. So q0 पे when you are reading 0, you are reaching q0, q1, and when you're reading 1, you will reach q1. q1 पे when you are reading 0, you will reach phi, and when you're reading 1, you will reach q0, q1. q0, q1 पे 0 और 1 का है सेल्फ लूप, एंड phi पे है सेल्फ लूप ऑफ 0 and 1. So how many states do I have? 1, 2, 3, 4. I have now 4 states in my final DFA. Right? So this is how you will be converting from NFA to DFA. So if ever they will give you any NFA, so if in order to convert to DFA, this is how you will be proceeding. Agar if suppose they have only given you transition table, then with transition table also you can, we did not discarded dead state. This was not a dead state. This was the state that was not reachable by initial state. This is not a dead state. नीतू, ये dead state नहीं है, ये state है जो reachable नहीं है initial state से. Anyhow,
ठीक है, बट यहाँ पे यू कैन रीच 5 विद द हेल्प ऑफ दिस इनिशियल स्टेट पे आप रीच कर सकते हो. एंड वाई वी आर इंक्लूडिंग नल स्टेट और डेड स्टेट? वी आर इंक्लूडिंग डेड स्टेट बिकॉज Q1 के पास कोई जगह नहीं है जाने की ऑन रीडिंग 0. And in DFA, we do include dead states only when we have to make a transition that is not included in the question. Okay, this is not a dead state, this is a unreachable state. आप इसको unreachable state बोल सकते हो. That cannot be reached by initial state. Okay. So that's it for today. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क. ठीक है, विल शेयर दिस PDF ऑन ग्रुप ओनली. टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आई शेयर दिस PDF एंड आई होप यू ऑल नो दैट ग्रुप नेम. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. वील हैव क्लास टुमारो नाउ and most probably either I'll bring any topic, any new topic, or we'll discuss with the questions. ठीक है, and the course is starting from 1st Feb, so please, those who want to join, feel free to enroll it, and please enroll as fast as you can. Okay, chalo, thank you everyone, bye bye, take care, good night.